तो ये जो बहुत ही सुंदर ये रचना है, चंदनाचे हात पाय ही चंदन परिसाचे हीन नाही कोणी अंग, दीपा नाही पाठी पोठी अंधकार सर्वांगी साखर अवघी गोड, तुका म्हणे तैसा सज्जना पासोनी पाहता अवगुण मिळेची ना। संत तुकाराम की ये रचना है। संत लोग कैसे होते हैं, सज्जन कैसे होते हैं, उसके बारे में। जैसे शुगर सभी तरफ से मीठी होती है, कुछ उसका पाठ मीठा है और कुछ नहीं, ऐसा नहीं होता। जैसे परिस वो पूरा के पूरा किसी को भी लगाओ उसका सोना बन जाता है, उसका कई पार्ट अच्छा है कई पार्ट अच्छा है, ऐसा नहीं होता। उसी तरह से जैसे अगर कोई दिया जलता है तो कुछ जगह पे अंधेरा है और कुछ जगह पे उजाला है, ऐसा नहीं होता। दीपा नाही पाठी पोटी अंधकार। उसी तरह सज्जन संत सज्जन ऐसे होते हैं कि तो पूरे के पूरे वो अच्छे होते हैं, थोड़े अच्छे हैं और थोड़े बुरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये अब आप सुनेंगे एक तारी पे चंदनाचे हात पाये ही चंदन। Such compositions take us towards a kind of non-duality, Advaita bhav जिसे हम कहते हैं. And this is एक तारी, single string. If you listen to the single string, if it is tuned properly, you can hear all the notes from it. And this is what the fundamental, because at the fundamental level, there is unity. The variety, the difference starts, coming up as you go up. But at the fundamental level, all the things are one. So ek tari, single string, and with that, when you sing a song, you start feeling some sort of vibrations in this. चंदनाचे हात पाय ही चंदन, चंदनाचे हात पाय ही चंदन, परिसा नाही हीन कोणी अंग, परिसा नाही हीन कोणी अंग, चंदनाचे हात पाय ही चंदन, चंदनाचे हात, दीपा नाही पाठी पोटी अंधकार, दीपा नाही पाठी पोटी अंधकार, सर्वांगी साखर, सर्वांगी साखर अवघी गोड, चंदनाचे हात पाय ही चंदन, चंदनाचे हात, तुका म्हणे तैसा सज्जनापासून, तुका म्हणे तैसा तुका म्हणे तैसा सज्जनापासून, पाहता अवगुण, पाहता अवगुण मिळेची ना, चंदनाचे हात पाय ही चंदन, परिसा नाही हीन कोणी अंग, परिसा नाही हीन कोणी अंग, चंदनाचे हात पाय ही चंदन,
you just have a thought of Krishna, because this is, as he said, it is all about romanticism, romantic mood. Now, romanticism is also very well accepted in Indian spiritual tradition. If you look at Krishna, if you think of Krishna, when Krishna is all everything almost. If he is going to war, then he is a very good warrior. He is nothing apart from the warrior. If he goes to mediate, then he is a very good mediator, negotiator. But if he is sitting with Radha, then he is a very good lover. Then he will play the flute. Then all the weapons and everything will go away. So romanticism has a special place in Indian tradition, the spiritual tradition. And as I said, Krishna depicts every kind of emotion. I would say Krishna is the epitome of all the human emotions. Because everything is there in Krishna. Like Rama is Maryada Purushottam. There are some limitations. That's a Maryada. Limitations. But then Krishna, there is no limitation. Krishna is everything. And you can relate to Krishna. Everybody can relate to Krishna. And romance is perhaps, according to me, is, something that best depicts. It is Krishna depicts the romance the best, I would say. So this Lavani is a kind of, in Maharashtrian culture, this depicts the romance and everything. And it's a very different kind of, song, we can say.